Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. I am Amina Munir from the batch of MS Biotechnology. I am going to present my presentation to the respected Dr. Hamad Majid, who is the head of Department of the Chemistry in the University of Management and Technology, Iqbal campus. The topic which I am going to study today and which we are going to study today is collaborative robots. Before going to deep into the topic, we will look at the table of contents, introduction, history, type of cobots, tool used in the cobots, difference between the cobot and the robot. Industries using cobots, which is scope and conclusion about the cobots. So what are the cobots? Cobots को हम इस तरह रेफ़र करते हैं कि ये हमारे पास कोलैबोरेटिव रोबोट्स हैं जिनको डिज़ाइन इस तरह किया जा सकता है कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करके एक ही वर्क स्पेस में एक ही इन्वायरमेंट में काम करें। इनको स्पेसिफ़िकली इस तरह बनाया जाता है कि ये सेफ़ हों ह्यूमंस के लिए, इनको असिस्ट करें इनके कामों में, और ये हमारे काम डिफरेंट तरह की डोमेन्स में रेंज करते हैं, हमारी हर तरह की इंडस्ट्री में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हमारी हेल्थ केयर से। ये काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये इक्विप्ड होते हैं सेंसर्स के साथ जो कि उन्हें एक फ़ील देते हैं। Cobots refer to the collaborative robots trying to work alongside humans or shared workspace or environment. These cobots are specifically built to interact safely with humans and assisting them in tasks that range from industrial manufacturing to the healthcare and beyond. So, how cobots are invented? Cobots invent कैसे हुए, ये टर्म कब यूज़ हुई, किसने यूज़ की, ये we will study about this. The term cobot was coined by the Brad Gia researcher at the Northwestern University at the time in response to a lab competition to come up with a better name for the invention. Cobots are the collaborative robots who are invented in 1996 by the J. Edward Colgate and the Michael Peshkin, professor at the Northwestern University. उन्होंने फ़ाइल किया यूनाइटेड स्टेट में एक पेटेंट जिसका नाम किया कोबॉट्स, और जिसका मकसद था एक ऐसा अपरेटस या मेथड जो कि डायरेक्ट करता है फ़िज़िकल इंटरेक्शन की एक पर्सन के साथ, दो के एक पर्पस काम कर सकते हैं और जो कि कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के साथ। सो द इन्वेंशन रिजल्टेड फ्रॉम द 1994 जर्नल मोटर्स इनिशिएटिव लेड बाय द Prasad Akela for the GM Robotics Center and the 1995 General Motor Foundation researcher grant intended to find a way to make robots like equipment safe enough to team with people. What are the key characteristics of the cobots? What are the features that a cobot should have? सबसे पहले, it has the ability to work safely alongside by side with humans in a shared workspace. Flexible and easy to program, suitable for small batches production, frequently line changeovers, enhance worker safety by taking over dangerous, dirty and repetitive tasks, improve productivity, accuracy and product quality, reduce production costs by streamlining and process. So, unlike typical industrial robots, which are often confined to safety cages and can only work on the pre-programmed tasks, collaborative robots are designed to safe working in close proximity to human expression. This enables a more flexible, secure, and adaptable industrial environment. There are different types of industries in which collaborative robots are used for the welding purposes, for the material handling, for the assembly of different things, for the machine tending and for the packaging. So when we are talking about that cobot, the other word that came into our mind is the robot. So I have searched some key features that differentiate the cobots with the robots. First of all, we will talk about the safety. Designed for human safe. So when we're talking about the safety for the cobots, designed for human safe robots, collaboration with sensors and padding to detect, respond to contact. And we are talking about the industrial cobots separated from humans, safety cages due to speed, powers and size. And the flexibility, highly flexible and adaptable, easy to reconfigure for the different tasks. And we were talking about the industrial approach, generally less flexible, designed for the specific task and more time to reprogram. Programming, intuitive programming interfaces can be programmed by non-experts, and while in the industrial cobots, complex programming requires specialized knowledge and an additional software application. For the cobots, ideal for the tasks requiring a human-robot collaboration, repetitive or dangerous and fun. We are talking about the industrial robots suited for the high precision, high speed and high payload tasks with minimal human interaction.
So here's a dramatic illustration between the cobots versus robots. We will talk about the type of cobots on the programming and safety features. There are four major and different kind of cobot. Level 1 will describe the safety related monitor stop. Level 2 will describe the hand guiding. Level 3 will describe the speed and separation monitoring, and level 4 will guide the power and force limiting. We will first look at the power and force limiting robots. So, power and force limiting collaborative robots are what may people think when they hear the name of collaborative robots. These cobots are designed to enable direct collaboration with humans, employees without needing extra safety barriers, external scanner, vision system. An example of power and force limiting cobot involves used in automotive industry assembly line where it assists working in task lining, lifting, or precision assembly. The cobot designed to sense contact with people and stop operating, prevent injury. The next is called safety monitor stop cobot. Safety monitor stop cobot is collaborative robot safety feature where the cobot will stop moving when it senses a worker enters its workspace. This is similar to approach used in the more traditional industrial robots but without requiring the drive power to be remote. The cobot will slow down or completely stop when a worker is detected nearby and then slowly speed up once the worker moves away. This allows for increased safety for the human worker without promising the cobot's productivity. Safety-related monitor stop is one of the four main safety features for the collaborative robot specified in ISO TS 15066 along with the speed, separation, monitoring, power and force limiting and hand guiding. It provides a category 2 stop for IEC 60204 where the motion is seized but the power is not removed. जहाँ पे motion seized हो जाता है लेकिन power क्या होती है remove नहीं होती. Speed and separation. And robots can also called defenseless cobots work better when there is interaction between a human. Hand guiding cobots. Finally, hand guiding cobots have a safety related part on the end of the cobot's arm to enable an operator manually guide the robot. Different cobotic tools, grippers, EOAT end of arming tools. ग्रिपर्स का क्या मकसद होता है कि ये चीज़ों को पिकअप कर सकें और उनको नीचे भी रख सकें डंप. EOAT एंड ऑफ आर्मिंग टूल का क्या होता है कि स्केल प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती हैं ताकि वाइल लेटिंग यू माउंट टूल्स फॉर द कबोर्ड्स. टूल चेंजर्स का क्या मकसद होता है ये अब कबोर्ड्स को अलाउ करते हैं कि चेंज को अपनी टूल्स करें एटोनोमसली पर द नीड्स ऑफ द ऑपरेशन दे आर परफॉर्मिंग. विजन सिस्टम रिलाई करते हैं 2D और 3D कैमरास के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आइडेंटिफाई कर सकें पैटर्न को, स्पॉट्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सकें, बारकोड्स को. रेंज एक्सटेंडर्स का क्या मकसद हो सकता है कि इनेबल करते हैं कबोर्ड्स को टू इंक्रीज देयर रेंज इन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस. और फीडिंग सिस्टम का क्या काम हो सकता है इनके अंदर सारी डिवाइसेस इंक्लूड कर सकते हैं कि जो सप्लाई होती हैं रोबोट्स को विद ऑब्जेक्ट्स लाइक स्क्रूज फॉर असेंबली और अदर ऑपरेशंस. List of the industries that uses cobots: electronics, automotive, journal manufacturing, supply chain management, healthcare, plastic, food and agriculture, furniture equipment, scientific research, pharmaceutical, packaging and co-packaging, metal fabrication. Application of the cobots in the textile industry. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ भी मेनली फोकस ऑन द टेक्सटाइल एनर्जी. फैब्रिक की कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, स्यूइंग के लिए इस्तेमाल होती है, गारमेंट की असम्बली के लिए हो सकती है, इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए हो सकती है, मटेरियल की हैंडलिंग के लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए. अदर इंडस्ट्री में इसका काम है मेटल एंड मशीनिंग में क्या हो सकता है कबोर्ड्स क्या सकते हैं टास्क करते हैं एक डाई कास्टिंग में, CNC में प्रेस ब्रेक्स कर सकते हैं, वेल्डिंग में कर सकते हैं, अलाउइंग वर्कर टू फोकस ऑन हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स. देयर अफोर्डेबिलिटी एंड क्विक रीप्रोग्रामिंग एनेबल रिड्यूस डाउन टाइम एंड टर्निंग अवे फेवर अपॉर्चुनिटी. प्लास्टिक और पॉलीमर्स में क्या हो सकता है कबोर्ड असिस्ट विद इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, पॉलिशिंग, pelletizing and 3D printing, lightweight cupboards or mobile carts, load and unload printer plates. Education and science cupboards educate students, help them technician run experiment without human contamination risk. Food and beverage industry में cupboards handle repetitive tasks in unfavorable environment, packaging products and tend machine. They supplement human workers during seasonal bursts and enable new products line.
Then best cobotic brands. There are different type of cobotic brands which are now in marketing, but we study few of them. One is called Universal Robots. A pioneer in cobotic market, Universal Robots has differentiated itself in UR Plus solution and has a global network of distribution and certified products. Fanuc Corporation, major player in the industry. Fanuc has recently joined high payload capacity collaborative robots feature portfolio from industry robots. Techman Robot, a division of Quanta Computer Group. Techman introduced the first cobot with reliable computer vision and become the second most popular brand of the cobot. And ABB, a pioneer in automation, ABB launched first two small arm collaborative remote and has since expanded its cobot range with models like Swifty and Goofa focus on the speed and user experience. So, what is Fanuc? Fanuc is the 4G automation, numerical and control. And what is ABB? ASEA Brown Boveri. The new corporation would remain headquartered in both Zurich and Switzerland. And Franca Amica, founded by the robotics specialist Franca Amica, is known for its Panda robot, which is remarkably for its bringing and safety, especially in education and research. These brands have stood out in the robotics market through their innovation, technologies, user-friendly features, and strategic partnership to expand their research and settings. ड्रॉबैक्स ऑफ कोलैबोरेटिव रोबोट्स, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं. लोअर पेलोड कैपेसिटी, लिमिटेड स्पीड, नॉट एज एफिशिएंट एज इंडस्ट्रियल रोबोट, रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन. ड्रॉबैक्स, सेफ्टी अप्रूवल प्रोसेस कैन बी चैलेंजिंग एंड नॉट इंटायरली डिपेंडेंट. लोअर पे लोड कैपेसिटी क्या हो सकते हैं कि इनकी एक स्पेसिफिक पे लोड कैपेसिटी होती है जो कि होती है 3 से 10 kg के ऊपर, और ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. अप टू 35 kg ये एक पे लोड हैंडल कर सकते हैं. लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये अप टू 2 टन भी हैंडल कर सकते हैं. लो लिमिटेड स्पीड, इनकी स्पीड लिमिटेड होती है 2.5 मिलीमीटर के हिसाब से, और 4 टाइम्स स्लोवर दैन होती है इंडस्ट्रियल रोबोट्स के, और इनके एफिशिएंट भी नहीं हो सकते इंडस्ट्रियल रोबोट जितने. और उसके बाद इनके हर टाइम ह्यूमन सुपरविजन चाहिए होते हैं. इफ़ ह्यूमंस आर नॉट सुपरवाइजिंग द रोबोट्स दे विल नॉट वर्क एफिशिएंटली एंड एनी एरर कैन अकर. Then they relocating a robot or changing its task tool often requires senior safety certification, which can be time consuming and costly. Not entirely independent, cobots are not able to operate full capacity without human employees present, unlike industrial robots. In summary, while cobots offer advantages in flexibility and safety, they have limited in payloads, speed, efficiency and independence of them. Future scope of cobots. इन समरी हम ये करेंगे कि 2030 तक कोबोट्स करेक्टराइज हो सकते हैं रैपिड ग्रोथ की, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, इनकी ह्यूमन कोबोट कोलैबोरेशन को इन्हेंस किया जा सकता है, उन कस्टमाइजेशन को भी इन्हेंस किया जा सकता है, ताकि ये हमारी सारी की सारी नीड्स के इंडस्ट्री नीड्स के साथ ना मीट कर सकें. और द फ्यूचर ऑफ कोबोटिक्स विल प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड एडेप्टिबिलिटी, लीडिंग टू इनहेंस एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्री. कंक्लूजन में हम यही कर सकते हैं कि कोबोट्स हैव लेवल्ड द प्लेइंग ग्राउंड फॉर स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्रीज फॉर ईयर्स. Large industries have been benefited for automation by traditional robots, but these expensive, complex and large products were made for high volumes, low volumes and constant production operation, opposed to high mix production typical for smaller manufacturers. Collaborative automation has turned into adaptive, affordable and user-friendly technologies allow companies for just about any size to improve productivity, better quality and respond more rapidly to varying customer demands. सो विद द यूज़ ऑफ कोबोट्स हर एक इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है. हम अपनी किसी भी इंडस्ट्री को ले रहे हैं, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर होम्स, देयर आर मोस्ट ऑफ appliances that are working on the cobots. So in future there will be no life and no easiness without the cobots, and we should work more on it ताकि हम इसको सस्टेनेबल भी बना सकें, ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो. सो
Here is the list of references that I used to make this presentation, and thank you so much for giving me attention.